Assalamu alaikum dear students. This is our third lecture on John Keats. This is an ode, a poem, a very beautiful and artistic poem by John Keats. I have already delivered 2 lectures on this poem. This is our third lecture, and we are going to start our, I think this is 4th stanza. Am I right? Yes. This is 4th stanza. Yes, sir. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his powers, but on the viewless wings of poison, through the dull, though the dull brain perplexes and retards. Already with thee, tender is the night, and happily the queen moon is on her throne, clustered around by all her starry face. But here there is no light, save what from heaven is with the breezes blown, through verdures, glooms, and winding mossy ways. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs, but in embalmed darkness, gas eats sweet, wherewith the seasonable month endows, the grass, the thicket, and the fruit tree wine, white hawthorn, and the pastoral eglantine, far-spreading violets covered up in leaves, and mid-May's endless child, the coming musk rose, full of deadly wine, with the murmurs spawn the flies on summer eves. अब जरा मीनिंग्स लिखें मुश्किल अल्फाज के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके जरा मीनिंग्स लिखें. दी का मतलब है यू not charioted. Chariot का मतलब है driven by. The third form of drive. Chariot असल में गाड़ी को कहते हैं. Chariot by Bacchus. Bacchus का मतलब है the god of wine. Small g के साथ लिखें the god of wine. The god of wine in Greek mythology. Parts का मतलब है leopards. Leopards. Leopards Parts is the short form of leopards. Cheetah को कहते हैं cheetah. But on the viewless का मतलब है invisible. Viewless का मतलब है invisible. Wings of poesy. Poesy का मतलब है poetry. Though, अगरचा, the dull का मतलब है unattentive. Dull का मतलब है unattentive, not attentive. Not attentive. Perplexed इसका मतलब है confused, confusing, puzzling. Perplexed का मतलब है perplex, का मतलब है confused, puzzle. Yes. Retards का मतलब है to stop. Retard का मतलब है to stop something from functioning.
दी का मतलब है यू, टेंडर का मतलब है, टेंडर इज द नाइट, मतलब है द नाइट इज अबाउट टू डाई, द नाइट इज अबाउट टू एंड। टेंडर का यहां पर मतलब काम नहीं है, टेंडर के यहां पर मतलब है कि रात खत्म होने वाली है। एंड हैप्पी, हैप्पी का मतलब है बाय चांस, हैप्पी मीन्स HAPPY, हैप्पी का मतलब है बाय चांस। द क्वीन मून, क्वीन मून का मतलब है द मून। Keats refers to the moon as the queen of the sky, the heavens. Are you getting my point? And the sky is termed as the throne of the moon, the queen moon. Are you getting my point? The sky is described as the throne, and the moon is described as the queen, and the stars are described as on her throne. Throne का मतलब है तख्त, यहाँ बादशाह या मलका का जो तख्त होता है, यहाँ पे थ्रोन का लफ्ज स्काई के लिए इस्तेमाल हुआ है। समझ आ रही है? क्लस्टर्ड का मतलब है कवर्ड, सराउंडेड बाय ऑन और स्टारी का मतलब है स्टार्स से निकला है, लाइक ब्राइट लाइक स्टार्स, स्टारी का मतलब है ब्राइट लाइक स्टार्स। फेस, FAYS, फेस का मतलब है फेरीज, फेरीज, फेरीज। फेस का मतलब है फेरीज। But here there is no light, save what from heaven is with the breeze blown. Breeze का मतलब है, breeze means soft wind, हल्की फुल्की ठंडी हवा, हल्की फुल्की ठंडी हवा। Watchers, watchers का मतलब है darkness, gloom का मतलब है dim, winding mossy ways, winding mossy ways का मतलब है full of green, mossy ways का मतलब है full of green, full of grass and green leaves। winding का मतलब है zigzag, zigzag। Zigzag. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense. Incense का मतलब है sweet smell, smell। Boughs का मतलब है branches of the trees। Embalmed darkness, embalmed darkness का मतलब है sweet smelling darkness। embalmed का मतलब है शिफा बख्शने वाली अंधेरा। each sweet का मतलब है each flower wherewith the seasonable, seasonable का मतलब है the month of May, spring। the seasonable month का मतलब है the month of spring, the season of spring। endows का मतलब है to give birth, to give birth to flowers and leaves and trees and plants। in the season of spring, flowers, trees, plants, green leaves are given birth by the trees, by the plants। the grass, the thicket, grass का मतलब है घास, the thicket का मतलब है झुंड, दरख्तों के झुंड। fruit tree, fruit का मतलब है फलों के दरख्त। wild का मतलब है जंगल में, जंगलात में। white hawthorn, white means सफेद, hawthorn means it is the name of a flower। the pastoral का मतलब है जंगली, wild। eglantine means the type of wild rose, eglantine means a type of wild rose, a type of wild rose। fast fading, fast fading का मतलब है fast withering, wither का मतलब है मुरझाना, जल्दी मुरझाना। fast fading means जल्दी मुरझाना, fast withering। fast
वायलेट्स का मतलब है पूल, वायलेट्स मीन्स पूल। कवर्ड का मतलब है सराउंडेड, छुपे हुए, हिडन। लीव्स का मतलब है पत्ते। एंड मिड में एट द चाइल्ड स्टैंड्स फॉर अर्ली स्प्रिंग, फॉर द मिड स्प्रिंग, सॉरी मिड में का मतलब है the middle of the spring season, in the middle of the spring season. Musk rose is the name of a flower full of baby wine. Baby wine का मतलब है sweet juice। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं और फूल के पत्तों को देखते हैं, पत्तियों को, तो उस पर शबनम के कतरे होते हैं और उनमें अपना जूस भी होता है, जिस पर ये आप देखते हैं तितलियां वगैरह जो है बैठती हैं और उनको पीती हैं और उससे वो शहद बनाती हैं। द मर्मर्स, मर्मर का मतलब है बिनबिनाहट, बिनबिनाहट, बिनबिनानी, बिनबिना, बिनबिनाहट, मर्मर्स। हॉर्न का मतलब है पीछा करना, HAUNT, हॉर्न ऑफ फ्लाइज और समर ईव्स, ईव्स का मतलब है इवनिंग्स, गर्मियों की शामें।